So ଆମେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା what is inertial mass and gravitational mass. ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା inertial mass କ'ଣ. ହେଲା. So first inertial mass ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣ inertia କ'ଣ. ନା it is the property of a body by virtue of which the body is unable to change its state of rest or of uniform motion along a straight line unless and until an external force is applied to it. That suppose the external force act any ଗୋଟେ rest object ଟା rest ରେ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ moving object ଟା moving condition ରେ ରହିବ ବା ଗୋଟେ rest body ଟାକୁ ଆମେ moving condition ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ moving body ଟାକୁ ଆମେ rest condition ଆଣିବା ପାଇଁ जो external agent ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ force ବୋଲି କହିବା. ଓକେ, ସେଟା ହେଉଛି inertia. So inertia କ'ଣ ନା it is the property by virtue of which the body is unable to change its state of rest or of uniform motion along a straight line unless and until an external force is applied to it. ହେଲା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇନି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ରହିବ ବା ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ. ଏଇଟା ହେଉଛି inertia. Inertial mass କ'ଣ ନା it is the property of a body. It is the property of a body which determines it is the property of a body which determines its resistance to a change in its state of rest or of uniform motion. It is the property of a body which determines its resistance to a state of rest or of uniform motion. ହେଲା, এটা হচ্ছে তোমার inertial mass. So if a force F produces an acceleration A in a material body, then the ratio F by A is called the inertial mass. So if a force F produces an acceleration A in a material body, then the ratio F by A is called the inertial mass. Therefore, inertial mass. So if a force F produces an acceleration A in a material body, then the ratio F by A is called the inertial mass. Therefore, inertial mass Mi equal to कितना असला F by A. F equal to Ma और inertial mass equal to कितना असला F equal to F by A. So if A equal to F, then so if A equal to 1, so if
A equal to 1 जदि acceleration जदि unit हो then केता हो mi equal to f हला that is inertial mass of a body is equal to the magnitude of external force that is inertial mass of a body is equal to the magnitude of external force required to produce unit acceleration in the body required to produce unit acceleration in the body. Okay, so जदि आम जाने एफ इक्वल एम ए और एम आई इक्वल टू एफ बाई ए है जदि आम एक्सेलरेशन इक्वल यूनिट एक्सेलरेशन नबा ताले इनर्शियल मास इक्वल टू एफ दैट इज इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन द बॉडी इटा होछ तमरा इनर्शियल मास हला तापर हम देखिबा व्हाट इज ग्रेविटेशनल मास gravitational mass. The mass of a body, gravitational mass kono, the mass of a body may also be determined the mass of a body may also be determined by measuring the gravitational force exerted on it by earth. So the mass of a body may also be determined by measuring the gravitational force exerted on it by earth. हला तापर केते gravitational force पड़ुछ सो ग्रेविटेशनल फोर्स को देखिरी आमे बॉडी रे मास बाहर करबे जेहेतु F = G * M * M by R square हला capital M is the mass of the earth and small mass of the body, so the small mass M determined is known as your gravitational mass. So the mass of the body can also be determined by measuring the gravitational force exerted on it by earth. हला ए बॉडी ऊपर ए जो स्मॉल मास बॉडी ऊपर केते ग्रेविटेशनल फोर्स पड़छ से जो स्मॉल एम डागु को दोछि तमरो ग्रेविटेशनल फोर्स सॉरी से को होछि ग्रेविटेशनल मास आमे सेथुर ग्रेविटेशनल मास टा कैलकुलेशन करबा हला since हम जानि छे since the gravitational force exerted on it by earth F equal to G into तो फिर कहता है G into M by R square है ना gravitational force exerted on body M
हाँ exerted on body of mass m is given by F equal to gmm by r square और where it कौन होगा where small m is the mass of the body is the mass of the body capital MLR is the mass of earth R is tomorrow R is the radius of earth ହେଲା सो जेतु तुम आसला F equal to gmm by r square है और ये कितना आसो और m equal कितना आसो दिस इज इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 1 हाँ स्मॉल m equal कितना आसो स्मॉल m equal आसला f by gm by r square ହେଲା बुझुची सो m mass small m mass body ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स केते पड़छ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन m by earth ହେଲା केते f equal gm by r square और m equal केते असला f by gm by r square ହେଲା एट जमे स्मॉल m डा पाइले एडा कोस तुमरो ग्रेविटेशनल मास लिख दियो ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on a body of mass m body of mass m small m hala by earth hala gravitational force exerted in the body of mass m by earth keta asla F equal to gm by r square और स्मॉल m इक्वल कितना f by gm by r square ये जो इक्वेशन 2 हमें पाइले स्मॉल m पाइले इटा तुमरो ग्रेविटेशनल मास हला द मास m डिटरमाइंड इन इक्वेशन 2 द मास m determined in equation 2 is known as gravitational mass सो तुम जदि ग्रेविटेशनल मास पचारे कौन तुम ये लिख सो ग्रेविटेशनल मास कौन द मास ऑफ ए बॉडी मे आल्सो बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on it by earth so gravitational force exerted on a body of mass m by earth केता असला F equal to gmm by r square गोटे m मास ऊपर केते ग्रेविटेशनल फोर्स पड़छ एती फोर्स पड़छ where m is the mass of the body capital M is the mass of the earth and r is the radius of earth ହେଲା और so where m is the mass of the body capital M is the mass of the earth and r is the radius of earth हला और फ्रॉम इक्वेशन 1 रु हम स्मॉल m केते पाइबा f by gm by r square हला ए जो हम स्मॉल m डा पाइले एडा को दोस्त हमरो ग्रेविटेशनल मास द मास m डिटरमाइंड इन इक्वेशन 2 is known as your gravitational mass हला सो एडा गोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब एडा पचाउछि इनर्शियल मास कोन ग्रेविटेशनल मास कोन तुम जदि पचारियो इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास कोन करले तमे एति लिखियो ओके
Thank you. So ଆମେ ଦେଖିବା another very important question, relation between gravitational field intensity and gravitational potential. अच्छा ଆମେ ଜାଣିଛେ gravitational potential କ'ଣ? Gravitational potential at a point in a gravitational field is defined as the amount of work done in bringing a unit mass from infinity to that point. ହେଲା unit mass ବଡିଟାକୁ infinite to ସେ point କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତିକି work ଦରକାର ପଡୁଛି ତାକୁ କହୁଛି କ'ଣ? Gravitational potential. So from the definition of gravitational potential, from the definition of gravitational potential, V equal to minus integration of infinite to r E dot dr. ହେଲା ଏଇଟା ଦିଅ ତୁମର ଇକ୍ୱେସନ୍ ନମ୍ବର 1 ହେଲା और v इक्वल हम केते लिखिबा v इक्वल टू ex dx plus ey dy plus ez dz. Where E equal to କେତେ ଆସିବ exi plus eyj plus ezk ହେଲା and dr equal କେତେ ଆସିବ dxi plus dyj plus dzk ହେଲା अच्छा हमर जे इक्वेशन 2 आसला आको कोन करबा डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू xy z हैला नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 partially with respect to x, y and z we get ना आको जदि हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करबा केता होबो डो v by डो x इक्वल केता हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट जिवो हां केवल ex रहइबो डो बाय डो एक्स इंटू ey 0 हो जिवो ez 0 हो जिवो केवल ए फैक्टर रहइबो दिस इज इक्वल टू आसीबो माइनस ex सेमिति आको जदि विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करबा केता हो केवल y डर रहइबो x 0 हो जिवो सेमिति आसीबो तमरो डो v बाय डो y हां डो v बाय डो y इक्वल टू आसीबो माइनस ey and dou v by dou z etu kata asibo minus ez बुझला और हम केते पाइबा और ex equal to आसीबो माइनस डो v by डो x ey equal to asla minus डो v by डो z and ez केता आसीबो
minus dou v by dou z ହେଲା ଆସିବ ଆମର dou v by dou x equal minus ex ଯଦି ହବ ex equal minus dou v by dou x ସେ ey equal ଆସିଲା minus dou v by dou y and ez equal କେତେ ଆସିଲା minus dou v by dou z ହେଲା hence electric field intensity E equal କେତେ ହବ hence E equal କେତେ ଆସିବ E equal ଆସିଲା EXI cap ହେଲା E in terms of rectangular component କେତେ ହବ EXI cap plus EYJ cap plus EZ K cap okay or EX equal to this minus dou b by dou x into I cap ହେଲା ସେମିତି EY equal କେତେ EY equal ଆସିଲା minus dou b by dou y into j cap ସେମିତି minus dou b by dou z into k cap equal କେତେ ଆସିବ minus into ଏଟା କେତେ ଲେଖିବା ଆମେ ଏଟା ଟିକେ अरेंज करदवा I cap dou by dou x ओके माइनस टू कॉमन कर दीजिए प्लस j cap dou by dou y plus k cap dou by dou z into v ହେଲା अच्छा ଆମେ ଜାଣିଛେ I cap dou by dou x plus j cap dou by dou y plus k cap dou by dou z equal to gradient मा तक नाबला बोली मधु को आछो ओके इक्वल केते आसला माइनस नाबला v सो e इक्वल केते आछो e इक्वल आसला हला और हम तो लिखि परिबा और e इक्वल टू माइनस नाबला बदला हम लिखिया ग्राड हला आको ग्राड मधु को जाउची माइनस ग्राड v हला that is electric field intensity is equal to negative of potential gradient okay that is electric field intensity that is gravitational field intensity that is gravitational field intensity is equal to negative of potential gradient okay that is gravitational field intensity is equal to negative of potential gradient for one dimension e equal केता हो e equal असला minus dou v by dou x हला and for 3 dimension e equal केता आसो minus dou v by dou r हला एटा होस तमरो रिलेशन बिटवीन gravitational field intensity and gravitational potential
ହେଲା 4a ହେଲା that is E equal to minus nabla b or E equal to minus grad b, that is gravitational field intensity is equal to negative of potential gradient. E is the gravitational field intensity and P is the gravitational potential. Okay, so it out a very important question. पचारे तुमको derive a relation between gravitational field intensity and gravitational potential हला तुम से 3 मार्क क्वेश्चन पचारिबो पचाले तमे एमती लिखियो हला बुझिपारलो एटा मु तुमर सब जगह तुमर जो 4टा यूनिट अच्छे यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 प्रतिटार मु यूनिट देबी से तो लेसन मध्ये मेंशन करथिबी यूनिट 1 लेसन 1 यूनिट 1 लेसन 2 यूनिट 1 लेसन 3 हला सेमते यूनिट 2 आसियो यूनिट 2 रो लेसन 1 लेसन 2 लेसन 3 लेसन 4 हला सेमते करगी प्रत्येक क्वेश्चन रे तमरो यूनिट मेंशन थिबो लेसन मेंशन थिबो सेटा सब बेस करी सीरियली तमे लिखियो नोट्स करियो सीरियली लिखियो हला लिखले तमरो सीरियली मेंटेन हबो आताको भलसे नोट्स स्पोर्ट्स नीट एंड क्लीन नोट्स मेंटेन करियो आताको भलसे पढ़ा पढ़ी करियो भलसे प्रैक्टिस करियो जोडा तुमु सेमेस्टर परीक्षा पई वेरी वेरी नीडफुल एंड वेरी यूजफुल हबो हला हम नोट्स लिखिबानी आमे परीक्षा लास्ट को सब जगह एट ए टाइम पढ़ी परिबानी कि आमे सब जगह ए गूगल रो काडी मध्ये पढ़ी परिबानी सेति में जो दिन जो लेसन तुमरो सेंड करा होची ताको भलसे बुझिरी भलसे लिखियो ओके थैंक यू।